वेलकम बैक टू द 20% सीरीज इवनिंग का आवर नंबर 8 और उसमें आज हम देख रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का आज का हमारा लेक्चर नंबर है 4। थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 5 जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 4। लेक्चर नंबर 4 है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी। We have the different types of enthalpies. Among these different types of enthalpies, we have enthalpy of combustion, enthalpy of formation, enthalpy of atomization, and enthalpy of ionization. These 4 types of enthalpy, and along with that, some different topics we are discussing here. सबसे पहले कल हमने देखा था बच्चों enthalpy. We have the formula of enthalpy. Enthalpy is denoted by H, and it is the sum of internal energy plus work done. एंड वी हैव द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो भी है यार एंथैल्पी, अगर वहां पे एनर्जी में चेंज होगा तो एंथैल्पी में चेंज होगा, कोई सिस्टम वर्क भी करेगी तो भी क्या में चेंज होगा, एंथैल्पी। तो वेदर देयर इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी और देयर इज अ चेंज इन द वर्क डन, देयर इज अ चेंज इन द एंथैल्पी, वहां पे क्या में चेंज होगा, एंथैल्पी में चेंज होगा। एज देयर इज अ चेंज इन एंथैल्पी बच्चों, there is a change in internal energy and there is a change in the work done, there is a change in the enthalpy. अभी हम एक एक से शुरुआत करते हैं। कंबशन मतलब जलाने की प्रोसेस। जब हम किसी को जलाते हैं तो जलने वाला तो जलता है लेकिन बाजू वाले को गरम लगता है ना। जलने वाला जलता है लेकिन बाजू वाले को गरम लगता है, मतलब वो जलते जलते क्या रिलीज करता है, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी, एंड दैट हीट एनर्जी इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन, और इसीलिए उसका नाम रखेंगे एनर्जी रिलीज हो रही है, देयर इज अ चेंज इन द एनर्जी, एज देयर इज अ चेंज इन एनर्जी देयर इज अ चेंज इन द एंथैल्पी, एंड दैट चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, दैट चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंड दिस एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा सी। लेकिन जब हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो हम उसका 1 मोल सब्सटेंस लेंगे। कितना मोल, 1 मोल। ठीक है, देखो अभी ये बैच की संख्या आपको दिख रही है और समझ जाओ कि ये बैच की संख्या अभी कहाँ तक जाएंगे, है ना, आने वाले 15-20 दिनों में, 1 महीने में। इसलिए जो भी लोग पूरा सिलेबस रिवाइज करना चाहते हैं 2 घंटे करो, सुबह का करो, शाम का करो, है ना। फिर क्योंकि 1-2 बच्चा रहेगा फिर आपकी भी इच्छा नहीं होंगी आने की, समझ रहे हो। तो इसलिए उधर कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए, 6 या 7 चैप्टर, 6 कंप्लीट हो गए मेरे ख्याल से, और ये दूसरा इधर कंप्लीट हो रहा है, तो 8 चैप्टर, 4-15 दिन में और 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। 1 महीना रुकेंगे तो फिर वो होगा, और आराम से ले रहा हूँ, है ना, लर्न करवा के ले रहा हूँ, ये करवा के ले रहा हूँ, और हर एक चीज समझा के बता रहा हूँ। चाहे तो मैं एक दिन में 1 चैप्टर भी कंप्लीट कर सकता हूँ, वो मैं लगाऊंगा सीरीज इसके बाद। ठीक है, चलो कंबशन। अब हमारे पास है बच्चों कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन मतलब क्या, ये ध्यान में रखना है सब लोग। कंबशन क्या है, कंबशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें सब्सटेंस एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इट्स कॉल्ड कंबशन। ठीक है, पहले लिख के देता हूं, बाद में पहले समझाता हूं, बाद में समराइज करके दूंगा। कंबशन में क्या होता है, कंबशन प्रोसेस है, जैसे कोई भी सब्सटेंस है, आई हैव द CH4, इसका ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जितने कार्बन है उतने वो क्या बनाएगा, CO2। कितने कार्बन है इसमें, 1, और इसीलिए ये CO2 भी कितना बनाएगा, 1, और हाइड्रोजन कितने इसमें, 4, तो इट विल फॉर्म हाउ मेनी H2O, twice H2O। So this is the CO2 gas plus twice H2O liquid. This is the CH4 gas we have, and this is the O2 gas we have. We get the CO2 gas plus how many H2O, twice H2O liquid. So this is the which reaction बच्चों, combustion reaction. CH4 gas plus O2 gas gives CO2 gas plus twice H2O liquid if the reaction is carried out at room temperature, that is 25 degrees Celsius. अब कितने कार्बन है इसमें, 1, तो CO2 भी कितना बनेगा, 1। ऑक्सीजन अगर हम इसकी रिएक्शन जब करेंगे बच्चों, एज वी आर गेटिंग दिस CH4 गैस प्लस O2 गैस, इट गिव्स हाउ मेनी CO2 गैस, 1। क्या कॉन्सेप्ट, जितने कार्बन उतने CO2। कितने कार्बन है इसमें, 1, तो 1 CO2। कितने हाइड्रोजन है, 4,
जितने हाइड्रोजन उसके हाफ वाटर। तो यहाँ इस रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीजन को बैलेंस कर देना, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, दोनों दो कितने हो गए 4, सो इट फॉर्म्स ट्वाइस O2 गैस। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ द प्योर सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न, 1 मोल ऑफ मीथेन इज कंप्लीटली बर्न in the presence of excess of oxygen, so it is called which reaction, combustion reaction। so इसमें what is combustion, अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, द चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा क्या है, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस इज 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब कौन सी स्टेट, गैसियस स्टेट, ठीक है। 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 and H2, it's called which reaction, combustion reaction। कौन सी रिएक्शन बच्चों, what do you mean by the combustion reaction, do you understand, चलो बोलो once more, what is combustion reaction, just before we have seen what is enthalpy of combustion, वो भी हमने देखी है, ठीक है। so enthalpy of combustion, combustion reaction लिख लेना है आपको, ठीक है। हाँ, अब दूसरा देखो, combustion के बाद पहले तो यहाँ पे ध्यान में रखो स्टैंडर्ड स्टेट, What do you mean by the standard state? स्टैंडर्ड कंडीशन पहले आपको ध्यान में रखनी है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है बच्चों, when the temperature is 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, एंड कॉन्सेंट्रेशन अगर है तो हाउ मच मोलर, 1 मोलर। दिस कंडीशन इज कॉल्ड विच कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन। और इस कंडीशन में वो सब्सटेंस जिस स्टेट में रहता है, चाहे सॉलिड रहो, लिक्विड रहो या गैस, उसको कहते हैं हम उसकी कौन सी स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट। तो ये स्टैंडर्ड क्या है, कंडीशन, और स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या है, मोस्ट स्टेबल स्टेट, मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ये मोस्ट स्टेबल स्टेट है बच्चों किसकी, सब्सटेंस की। कौन सी कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में, मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ सब्सटेंस अंडर विच कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन, मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ सब्सटेंस अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, most stable state of substance under the standard condition, most stable state of substance under the which condition, standard condition, ठीक है। most stable state of substance under the which condition, standard condition, it's called what, standard enthalpy of combustion, it's called what, standard enthalpy of combustion। तो कीप इन योर माइंड, इसको हम डिनोट करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सो नाउ व्हाट वी हैव रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट है कौन सी गैस, H2 गैस। ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट है O2 गैस। नाइट्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट है N2 गैस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट है Cl2 गैस, F2 गैस एंड सो ऑन। सोडियम मेटल की स्टैंडर्ड स्टेट है, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल की स्टैंडर्ड स्टेट है Na सॉलिड। और सोडियम मेटल की स्टैंडर्ड स्टेट है सोडियम सॉलिड। और दूसरा कौन है, सोडियम के बाद ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम। व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सोडियम, Na सॉलिड। उसके बाद हमारे पास है एक कार्बन, कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट है बच्चों C ग्रेफाइट। तो ये सारे एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड स्टेट है, ठीक है। और जब भी कोई सब्सटेंस
जब भी कोई सब्सटेंस 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस, कितना मोल? 1 मोल। जब 1 मोल प्योर सब्सटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है H2O, H2O प्योर मतलब सिर्फ अकेला वो, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं, दैट इज कॉल्ड प्योर। तो 1 मोल प्योर H2O बनेगा, कितने मोल? 1 मोल। 1 मोल ऑफ प्योर H2O इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कौन है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन इज विच गैस? H2 गैस, एंड ऑक्सीजन O2 गैस। 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कौन है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन है H2, तो कितना H2 लेना है? बैलेंसिंग के लिए रिएक्शन 1 मोल बनाना है, तो 1 मोल में कितने हाइड्रोजन एटम चाहिए? 2 ऑलरेडी है। ऑक्सीजन कितना चाहिए? सिर्फ 1, तो हाँ। तो जब ये होगा तो आप सभी जानते हो रिएक्शन होगी, इनके बॉन्ड टूटेंगे, इनके बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड बनेंगे। बॉन्ड टूटते वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी इवॉल्व। सो देयर इज अ चेंज इन एनर्जी, एज देयर इज अ चेंज इन एनर्जी देयर इज अ चेंज इन एंथैल्पी, एंड दैट चेंज इन एंथैल्पी occurs, that change in enthalpy occurs in the formation of, that change in enthalpy occurs in the formation of how much mole? 1 mole of H2. That change in enthalpy occurs in the formation of 1 mole of H2O from its constituent elements in their which state? Standard state. So as the 1 mole of H2O liquid is formed from its constituent elements in their which state? Standard state. तो इसको हम कहेंगे बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। What do you mean by this enthalpy of formation? Do you understand? Once more, क्या है ये enthalpy of formation? The change in enthalpy occurs when 1 mole of pure substance is formed from its constituent elements in their standard state. तब जो चेंज इन एंथैल्पी होगा उसको कहेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डू यू अंडरस्टैंड? इसमें जो भी होता होगा -200, जो भी एक आधा एग्जांपल की वैल्यू लर्न कर लेना है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा FH0 ऑफ H2O। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। इसको कैसा पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। We have seen the 2 enthalpies and very important thing, एलिमेंट को उसके स्टैंडर्ड स्टेट में बनाने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी बन के नेचर में रहते हैं, और इसीलिए हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बन के है, तो इसलिए उसको फॉर्म करने की जरूरत नहीं। तो उसके जिसको खरीदने की जरूरत नहीं, उसको खरीदने में खर्चा कितना रुपए है? 0। तो उसे फॉर्म ही करने की जरूरत नहीं, तो उसके फॉर्मेशन में एंथैल्पी चेंज कितना रहेगा? 0। एंड सो द ग्रेट कॉन्सेप्ट ऑलवेज कीप इन योर माइंड, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट in their standard state, standard enthalpy of formation of element in their standard state is equal to 0. So this is the standard enthalpy of formation of element in their standard state is equal to 0. That is the standard enthalpy of formation. So standard enthalpy of formation is given by standard enthalpy of formation of element in their which state? Standard state is equal to 0. That is the standard enthalpy of formation. ठीक है? And as we have, this is the standard enthalpy of formation, the enthalpy, standard enthalpy of formation getting next. ठीक है? After having this standard enthalpy of formation, that is very very important. Standard enthalpy of formation of H2 gas is, standard enthalpy of formation of H2 gas is 0, O2 gas 0, N2 gas 0. Getting? So this is the value of standard enthalpy of formation. After having this standard enthalpy of formation, आगे हम चलेंगे। ठीक है? So बरना बेटा, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0। चलो आगे चलेंगे बच्चों। वी हैव, दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आफ्टर हैविंग दिस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब नेक्स्ट वाली पढ़ेंगे। 2 पढ़ी हमने, पहली का नाम कंबशन, दूसरी का नाम फॉर्मेशन। अब हम तीसरी वाली एंथैल्पी देखेंगे।
ठीक है, दोनों में कितना मोल बनाना है, 1 मोल। 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम उसको क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और वी कैन से इट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ गए? नेक्स्ट, आफ्टर हैविंग दिस एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। थर्ड वाली एंथैल्पी है, कौन सी है थर्ड वाली एंथैल्पी? हाँ, एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन में क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है, CH4 मेरे पास सब्सटेंस है, इसको जब हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो उसके अंदर के सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, टूट के वो बनाएंगे C गैस एंड 4H गैस। तो इस प्रोसेस में जब जो क्या आएंगी, चेंज इन एंथैल्पी, हियर वहां पे उसके एटम बनेंगे इन विच स्टेट, गैसियस स्टेट, तो उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द चेंज इन एंथैल्पी occurs when 1 mole of gaseous substance is completely dissociate into its atom in which state, gaseous state, ठीक है, तो we say it is the enthalpy of atomization and it is denoted by delta AH, ठीक है, and this process is called atomization. So what do you mean by this atomization, do you understand? So keep in your mind, we have this is the atomization and this is called enthalpy of atomization, it is denoted by delta AH. Getting? What is this? Enthalpy of atomization कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा AH। चलायचं समोर, सुना, after having this enthalpy of atomization, this is CH4 gas, we get C gas plus 4H gas। नेक्स्ट, कितनी प्रोसेस हो गई, 3। फर्स्ट कंबशन, फॉर्मेशन, एटोमाइजेशन। अब कौन सी बाकी है, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या करते हैं कि 1 मोल गैसियस एटम से कितना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रोसेस में जो क्या आती है, चेंज इन एंथैल्पी, उसी को कहते हैं हम एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन जो हमने बहुत अच्छे से देखी है। तो अभी मैं चारों को समराइज कर रहा हूं, देखो 4 डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट में समराइज कैसे करना है, एंथैल्पी ऑफ, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसी को ब्रैकेट में यहां पे लिख देंगे डेल्टा CH0, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। यहां पे डेफिनेशन लिखेंगे, the change in enthalpy, the change in enthalpy that occurs when 1 mole of pure substance, when 1 mole of pure substance, उसके आगे का यहां लिखेंगे, when 1 mole of pure substance is completely burned, 1 mole of pure substance is completely burned in the presence of oxygen, when mole of completely in the presence of oxygen, it's called enthalpy of combustion, ठीक है, it is denoted by delta CH0 and it is, इसमें कुछ पॉइंट्स है तो it is always negative, ऑलवेज कैसा रहता है, नेगेटिव। एग्जांपल देना चाहते हो तो एग्जांपल देना जरूरी है इस केस में। कंप्लीटली बर्न, ये छोटा सा एग्जांपल है हमारा, CH4 plus O2, it gives the CO2 plus twice H2O liquid, इसकी जो वैल्यू रहती है दैट इज डेल्टा CH0 CH4, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी है एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बाद है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको डिनोट करेंगे डेल्टा FH0, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
What is this? The change in enthalpy that occurs when 1 mole of pure substance is formed. 1 mole of pure substance is मैंने यहाँ पे लिखा था तो यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है. 1 mole of pure substance is formed from its constituent elements. बघा मग डेफिनेशन विचारली ना, एकाला नाही येत मग लक्षात ठेवा, ठीक आहे. फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्स in their standard state, from its constituent elements in their standard state. एग्जाम्पल, CH4 गैस अगर बनानी है तो कौन है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट? सी, उसके ग्रेफाइट स्टैंडर्ड स्टेट एंड टॉइस H2 गैस. और इस प्रोसेस में जो रहेगा उसको डिनोट करेंगे डेल्टा CF0. इसलिए उसी का ले रहा हूं कि ऐसा लिखा है तो ये रिएक्शन लिखना और ऐसा लिखा है तो ये रिएक्शन लिखना. नेक्स्ट, थर्ड इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन atomization. It is denoted by delta AH. The change in enthalpy that occurs when 1 mole of pure substance is completely dissociated. The change in enthalpy that occurs when 1 mole of substance, pure substance, is completely dissociated. 1 mole of pure substance is completely dissociated in the 1 mole of pure substance is completely dissociated into its gaseous atom. 1 mole of pure substance, 1 mole of pure substance is completely dissociated into its gaseous atom. इसमें थोड़ा एक बात ध्यान में रखना, 1 mole of pure substance in which state? Gaseous state. It's completely dissociated into its gaseous atom. ठीक है, इट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. इसमें भी CH4 का ही एग्जांपल ले रहा हूं. ये बनाएंगे C गैस प्लस 4H गैस, और इसमें जो एंथैल्पी रहेंगी दैट विल बी द डेल्टा HAH, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ CH4 गैस. That is the standard enthalpy of atomization of CH4 gas. Next, ionization. Enthalpy of ionization. Enthalpy of ionization is denoted by delta ion H. This delta ion H is the enthalpy of ionization. बरं, ठीक है, बरं लवकर, ठीक है. Enthalpy of ionization is denoted by delta ion H. ठीक है, delta ion H. What is this? Enthalpy of ionization. The change in enthalpy that occurs when, आता याला व्हेन पासून घेतो, व्हेन 1 mole of electron is removed from 1 mole of gaseous atom. ठीक है, तो इथं व्हेन पासून घेतो फक्त हे व्हेन. The change in enthalpy घ्यायचे फक्त याच्यामध्ये, that occurs when 1 electron, change in enthalpy occurs when 1 electron is removed from each atom of 1 mole of gaseous element.
ठीक है, ईच एटम ऑफ वन मोल ऑफ गैसियस एलिमेंट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। सो जैसे मेरे पास है सोडियम इन अ गैसियस स्टेट, it forms Na positive gas with the removal of one electron. This is the delta ion H या जो भी है उसमें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो लगती है उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। सेकंड लगने के लिए लगती है जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट की वैल्यू कम होती है I1, सेकंड आयोनाइजेशन की ज्यादा, और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा। So this is the decreasing order of ionization enthalpies. This is first ionization enthalpy, second ionization enthalpy, and this is the third ionization enthalpy. Do you understand? After having these three ionization enthalpies, we have these are the different types of the enthalpies we have. First, we have the enthalpy of combustion, enthalpy of formation, enthalpy of atomization, and enthalpy of ionization. ठीक है, we have these different types of enthalpy, that is the change in enthalpy. क्या है ये? Change in enthalpy. Do you understand? चलो, now next these four types of enthalpies and how to summarize that we have seen. Next, अभी क्या है, हमारे पास अलग अलग तरह की एंथैल्पीज है। एक और एंथैल्पी हम देखेंगे, उसका नाम है बॉन्ड एंथैल्पी। इसी में ऐड कर देता हूं अभी, कौन सी एंथैल्पी? बॉन्ड एंथैल्पी। Listen, what is this bond enthalpy? फिफ्थ नंबर की एंथैल्पी है जिसका नाम है, कौन सी एंथैल्पी? बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। वो बॉन्ड का नाम लिखना है आपको, जो भी बॉन्ड होगा, एंड देन ये भी क्या है? द चेंज इन एंथैल्पी दैट अकर व्हेन the change in enthalpy that occur when one mole of the change in enthalpy that occur, ऊपर का लेना है, when one mole of particular type of bond, the change in enthalpy that occur when one mole of particular type of bond in gaseous molecule is break। जब एक मोल पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इन गैसियस मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ब्रेक। उस प्रोसेस में जो चेंज इन एंथैल्पी होगी उसका नाम है कौन सी एंथैल्पी? बॉन्ड एंथैल्पी। अब हम निकाल सकते हैं बच्चों एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड व्हिच एंथैल्पी? बॉन्ड एंथैल्पी। We can find out the value of enthalpy of reaction using that two types of enthalpies. One is the enthalpy of formation and another is the which enthalpy? Bond enthalpy. So keep in your mind, this formula is very very important, that is the enthalpy of reaction. Enthalpy of reaction is denoted by delta RH, as the enthalpy of reaction is denoted by delta RH and it is given by the formula. Enthalpy of reaction is denoted by delta RH and it is given by the formula summation of enthalpy of formation of product, standard enthalpy of formation of product minus summation of standard enthalpy of formation of reactant. Standard enthalpy of formation of product minus standard enthalpy of formation of reactant, that gives you the enthalpy of reaction, or we can say standard enthalpy of reaction. But if you want to find out the enthalpy of reaction in terms of bond enthalpy, so what formula you have to use? Summation of bond enthalpy of reactant bond. बॉन्ड एंथैल्पी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस
summation of minus summation of bond enthalpy जिसको डिनोट करेंगे डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड, summation of bond enthalpy of reactant bond minus summation of bond enthalpy of product bond. So keep in your mind, we have this is the bond enthalpy of reactant bond minus summation of bond enthalpy of product bond. This gives you the enthalpy of reaction. These are the two very important formula you have to keep in your mind for the enthalpy of reaction. ठीक है? After having these are the different types of enthalpies. अब हमारे पास और एक तरह की enthalpy है, that is called enthalpy of solution. Enthalpy of solution. That's it. Enthalpy of solution को हम डिनोट करेंगे डेल्टा सोल्यूशन H. ठीक है? उद्या आल्याबरोबर लिहून घ्यायचं ते. ठीक है? Enthalpy of solution. Enthalpy of solution is denoted by delta solution H. What is delta solution H बच्चों? Enthalpy of solution. Enthalpy of solution is denoted by delta solution H. और अभी कैसे निकालेंगे? जब क्या होता है, एक मोल सब्सटेंस जो भी गिवन अमाउंट ऑफ वाटर है या जो भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है उसमें जब वो पूरी तरह डूब जाता है तो वहां पे जो चेंज इन एंथैल्पी होती है उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में दो चीजें होती है. एक, सबसे पहले सोल्यूट और सोल्यूट के बीच का बॉन्ड क्या करना पड़ता है? ब्रेक. जैसे NaCl है तो Na और Cl के बीच में यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड है और NaCl सॉलिड होता है और उसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं लैटिस स्ट्रक्चर. उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड व्हिच एनर्जी? लैटिस एनर्जी. या उसी को कहते हैं हम कौन सी एंथैल्पी? लैटिस एंथैल्पी. एंड दैट लैटिस एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय डेल्टा LH. तो व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? उसको दो तरह से डेफिनेशन. एक मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते समय वहां पे जो चेंज इन एंथैल्पी आई उसी का नाम है कौन सी एंथैल्पी? लैटिस एंथैल्पी. ठीक है? द चेंज इन एंथैल्पी दैट अकर्स in the formation of 1 mole of crystalline substance from its constituent ions in the which state? Gaseous state. ठीक है? जैसे I can say this is the Na positive gas and this is the Cl negative gas. और ये दोनों कंबाइन होके जब क्या बनाएंगे? NaCl solid. So 1 mole of crystalline solid is formed from its constituent ions in gaseous state. तब जो change in enthalpy होगी that enthalpy is lattice enthalpy. लेकिन जब हमें इसको तोड़ना होगा और उसके पास से हमें constituent ions बनाने होंगे तो जितनी एनर्जी उसने रिलीज की उतनी ही एनर्जी वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब. और एब्जॉर्ब करके इसका डिसोसिएशन होगा. तो जब डिसॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको तोड़ के कौन से आयंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैसियस आयन. सो इट शुड हैव टू एब्जॉर्ब द एनर्जी इक्वल टू व्हिच एनर्जी? लैटिस एनर्जी. मतलब क्यों चेंज आ रहा है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में? तो पहले तो इट शुड हैव टू एब्जॉर्ब द एनर्जी इक्वल टू लैटिस एनर्जी. पहली बात. दूसरी बात, फिर इसको जब हम पानी में डालेंगे तो पानी में डालने के बाद ये जो आयंस है Na पॉजिटिव आयन or Cl negative ions, these ions will get surrounded by water. This is oxygen and this is hydrogen. It carry del negative, it carry positive. This is the water we have. This carry del negative, this carry positive. This is water we have. And there is one process. This process is called hydration or we can say it is a solvation. Keep in your mind. This process is called hydration or it is also called solvation. ध्यान रखना बच्चों, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हाइड्रेशन. या इसी को हम क्या कहेंगे? सॉल्वेशन. डू यू अंडरस्टैंड?
तो कीप इन योर माइंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन और वी कैन से इट इज अ सॉल्वेशन. क्या होगा हाइड्रेशन या सॉल्वेशन में, समझ गए? 1 मोल गैसियस आयन is dissolved in the solvent by the process of solvation. ये गैस था, अभी इसको घेर लेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी और एनर्जी कम होगी तो देयर इज अ चेंज इन एंथैल्पी इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन and so we say it is enthalpy of solvation. And when the solvent is water, then the process is called hydration, so it is called enthalpy of hydration. डू यू अंडरस्टैंड? सो ये लैटिस एंथैल्पी, इतनी एनर्जी उसको पहले एब्जॉर्ब करनी पड़ी क्योंकि NaCl को तोड़ के Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव गैस बनाना है. उसके बाद फिर Na पॉजिटिव को इसने घेरा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी, उतनी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई. तो इक्वल टू द हाइड्रेशन एंथैल्पी, वहां से एनर्जी क्या होगी, रिलीज. यहाँ पे एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब. यहाँ पे एनर्जी क्या हुई, रिलीज. और इस तरह देयर इज अ चेंज इन एनर्जी. तो ये है पहली हाइड्रेशन और दूसरी है सॉल्वेशन. डू यू अंडरस्टैंड? तो कीप इन योर माइंड वी कैन हैव द टू टाइप्स ऑफ एनर्जी. वन इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और वी से सॉल्वेशन. तो इसीलिए जब सॉल्यूशन बनेगा तो दो तरह की एंथैल्पी चेंज होगी. पहले सोल्यूट का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जिसका नाम है कौन सी एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, जिसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा LH. इतनी एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब. इक्वल टू विच एनर्जी, लैटिस एनर्जी. और उसके बाद वो एनर्जी क्या करेगा, इवॉल्व. इक्वल टू विच एनर्जी, सॉल्वेशन एंड नो हाइड्रेशन और सॉल्वेशन. तो हम उसको डेल्टा हाइड्रा H से डिनोट करते हैं. तो हाइड्रेशन एनर्जी. So keep in your mind, this is the enthalpy of solution. What is enthalpy of solution? The change in enthalpy when 1 mole of substance is completely dissolved in water by the process of hydration. या हम बोल सकते हैं 1 mole of the solid substance, 1 mole of the substance is dissolved in a solvent to form the solution. है ना? 1 mole of the substance is dissolved in water या dissolved in a solvent, particular amount of solvent to form the solution. तो that process में जो change in enthalpy आएगा, that is called enthalpy of solution. So in this way we have seen about 10 enthalpies: fusion, vaporization, sublimation. ठीक है. नेक्स्ट एटोमाइजेशन, कंबशन, आयोनाइजेशन, फॉर्मेशन. ठीक है. कितने हो गए, 4 न 3 7 बराबर. उसके बाद सॉल्यूशन कितना, 8. फिर लैटिस एंथैल्पी 9, हाइड्रेशन एंथैल्पी 10. ठीक है. एंड द लास्ट वन एंथैल्पी इज देयर, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. We have the great concept, everyone wants to become a stable. And we have seen the two very important formulas related to the enthalpy of reaction. You can calculate the enthalpy of reaction by using enthalpy of formation and bond enthalpy. Again one more enthalpy we have seen, bond enthalpy. So 1 dozen enthalpy se puri. And we can find out the enthalpy of reaction using bond enthalpy and enthalpy of formation. Always keep in your mind this formula. When we find the enthalpy of reaction using bond enthalpy, the formula is summation of bond enthalpy of reactant bond minus product bond. But when we find the enthalpy of reaction using enthalpy of formation, then product minus reactant. So in this way we can find out the enthalpy of reaction. Do you understand? And the last we are discussing here, that is electron gain enthalpy. We have the concept, everyone wants to become a stable. If you know, atomic number of chlorine is 17 and its shortcut electronic configuration is 287. To complete its octet, it has a need of 1 electron to complete its octet. So chlorine will accept how many electron? 1 electron, and it will carry 1 negative charge. And we get the electronic configuration 288.
इट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड इट फॉर्म्स द अनायन। क्या फॉर्म करता है ये? अनायन। कैसा अनायन? गैसियस अनायन। This is the chlorine. It accepts one electron and it is get converted into Cl negative gas, and its electronic configuration is 288. It forms this gaseous anion. और ये जो गैसियस अनायन बच्चों यहाँ पे बना है, कौन सा अनायन बना है? गैसियस अनायन। ये कैसे बना है? बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन। और जब वो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसकी क्या बढ़ गई? स्टेबिलिटी। As the stability increases, energy decreases. There is a loss of energy. So there is a change in energy. As there is a change in energy, there is a change in enthalpy. And that change in enthalpy. There is the change in enthalpy in gaining of electron, and that change in enthalpy in the gaining of electron is called which enthalpy? Electron gain enthalpy. उसी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा EgH, electron gain enthalpy. What is electron gain enthalpy? The change in enthalpy when one mole of gaseous ion accept one electron to form one mole of gaseous anion. ठीक है? One mole of gaseous atom accept one electron. Each atom accept one electron to form one mole of gaseous anion. Then the change in enthalpy is called electron gain enthalpy. So in this way we can have these 12 to 13 types of enthalpies of reaction. Okay? After that, the last topic is there, that is the spontaneity of the reaction, that we will complete tomorrow. And there is a possibility that spontaneity, तीन factor, enthalpy, entropy and gives free energy. ठीक है? So वो हम कल देख लेंगे. ठीक है? And then we will start our next unit, your favorite unit, that is electrochemistry.